for us. And before we start, let me introduce you to the indispensable part of our college, the campus TV and radio club, and the initiative by AICTE 360-degree feedback program. Our motto is Discover, Develop, Dominate with the tagline, Join us and unleash your potential. Founded by Mr. Kumar Gaurav, 2K19 batch, this club is working hard day and night to elevate the standard of BCE Bhagalpur in every aspect, whether in terms of academics, curricular activities, or placement. Today, we are here to add one more milestone in our journey with the one and only Sanjeev Suman sir. So, hello everyone, myself Khushi from Computer Science and Engineering branch. It is my pleasure to introduce you to our esteemed guest, Mr. Sanjeev Suman sir, for today's webinar. Sanjeev sir is an alumnus of prestigious BC Bhagalpur. His achievements work as an inspiration to many, and his expertise is value for us. Today, Sanjeev sir will be sharing his insights and experiences with us, and we are truly privileged to have the opportunity to learn from him. So, please join me in giving a warm welcome to Sanjeev Suman sir. Yes. Sir, before starting your experience, first of all, introduce yourself in brief. Yeah, thank you for introducing me. Yeah. I am Sanjeev Suman, and I did my engineering in the year 1990 to 94, and as a mechanical engineer. And for reference, my roll number was 9308. And after doing this degree course from BCE, I passed out in December 1994 in place of June. There was some delay of 6 months, and afterwards, when I joined the college, from the first day, I had an objective to pursue a job in public sector, because at that point of time, you might be aware, there was no much opening in private sector in India, and even economy was also not so much open with the global market. And that was the objective. And fortunately, you can say I got an opportunity when I came out from the college to work with IPCL. IPCL at that point of time was a PSU and pioneer in petrochemical business. Petrochemical, probably some of you may be knowing the product of petrochemical like high density polyethylene, low density polyethylene products like in daily use, which you are using like bucket, helmet, camera roll, and others, no, and poly bag, carry bags. So IPCL used to produce raw material, and basically all industry were consumer of IPCL in petrochemical business. So I worked there for more than 10 years, then moved to engineering and consultancy organization like L&T. L&T is in the business of various, it has a vast field, and it has a footprint in starting from ground to moon, you can say. Everywhere L&T is there, in almost all the products now. Yes. And yeah, I was in hydrocarbon business and then moved to various other engineering and consultancy organizations. All are were MNCs. Probably some of you may be knowing, may not be knowing, like Technip Energy. It is a France-based MNC. Then Petrofac, UK-based. Then Worley. Presently, I'm in Worley, and before that, I was with FMC. And of course, there's a vast experience in all the field related to equipment, plant, as I written earlier, petrochemical, refinery, oil and gas processing, not exploration, processing, then fertilizer, then power plant, and utilities. So, and expertise in the field of mechanical equipment, piping system, entire plant, project execution. So, these are the knowledge and experience which I gained throughout my career. Yeah, that is the brief, and in detail I'll talk, but I would like to have some understanding from all of you. What do you think at this stage? Probably you all are in the second year, or how is that? So in second year. Sir, we are all from second year. Okay, okay. So just I want to understand, what do you think and what is your aspiration in future? How do you want to be, and where do you want to be? Maybe after 2 years, definitely you all be coming from.
or from the college. So what kind of thinking and uh, expectation you all have? Then accordingly, I'll talk on those subject. Sir, we want And to know the roadmap which you followed in college from the very first year to till now where you are. What okay, you did, what we should not do, what are the things we should focus on. okay, okay, good. And any other things? So okay, so from first day of the college when I entered, one thing was very clear in my mind that I have to take degree in 4 years. That is why I opted BCE Bhagalpur at that point of time because my position or rank was good, so I could have taken admission in almost all the colleges of Bihar and outside. At that point of time, you can say REC or now it is mostly in all states NITs. But people, all my seniors whom I knew at that point of time suggested that you can go for admission in BC Bhagalpur, and usually it maintains the overall curriculum schedule of 4 years. But unfortunately, because of course the students are coming from all section, all part of the Bihar with different background, and in the college it is a very tender age where students are not in a position to analyze sometimes whether as a student I am doing right or wrong. It is all some people do in impulsive way certain things, and that affects at the later time when you come out from the college. So I was very clear. I'll clear in 4 years and then I'll get a job in PSU. No, that at that point of there was nothing else in my mind. So accordingly, I used to prepare in terms of I used to maintain, you can say, balance in all the sections of the engineering. Like best interest was in fluid dynamics, then machine design, workshop technology. At that point of time, I had no much interest because of sometimes professor also, if it is not so much interesting, or material science. But in industries, in mechanical engineering, no, all these subjects are very very useful. But there must be interest initially, then only you can enjoy. So now I'll narrate one small story. So probably you may understand, and that will help you in your career also when you advance or you choose your career. When I passed out, immediately I had no option or no job in December. So I moved to Delhi region to explore certain opportunities, maybe in private sector or PSUs, something. So, and there were a few more batchmates and friends, you can say they were also with me. We were staying together, like in bachelor status, and 3 or 4 students were staying in the same flat. So, of course, we are preparing for exams and also exploring for the private sector jobs. At that point of time, salary was in the range of 2,000 to 2,500, and expenditure, if you take a job, probably at the end of the month, nothing will be in your hand. Maybe you, if you commute by Yes, bus sir. or something, public transport, and if you eat food, 2,500 will be over. So I realized it is not meant for me. So I cannot work on such terms and conditions in private sector. Fortunately, IPCL I had processed from the college time, so appeared for what you call written test, and interview letter was not issued or not received. At that point of time, there was no internet, no email. Usually, postal service was the only available means. Other friends got the call letter for the interview. So, of course, sometimes I here in the process, I'll suggest you should have some good friend whom you can trust in life. Not necessarily all will be your good friend and you can trust, but for if you get even one or two good friends, that will be very very good thing in the life usually nowadays. So one person, of course, he said, देखो यार सबको मिला कॉल लेटर, यहाँ देख रहे हो सिर्फ तुम्हें ही नहीं मिला है. So definitely you must get it because we were knowing each other कि भाई कैसे हम लोग करते हैं, कैसे परफॉर्म करते हैं कॉलेज में या आफ्टरवर्ड्स आल्सो.
Then he suggested, at that point of time, we used to take Times of India newspaper. उसमें tender bulletin means for contract, no, all PSU used to issue tender notice for taking jobs by agency outside the company, means contractor and others. So one day there was a tender for IPCL. Then I got to know that it has one office in Nehru Place. Then he told me, let us go to the office and inquire about the interview process and why your letter has not come. So I went there. Then fortunately, those people who were in the marketing office said, अभी तो आपको कुछ नहीं मिलेगा. Interview is in the month of June. At that point of it was March 1995, you can say. I said, then when when the interview will be conducted in June, you come to that at that point of time, then you can check whether you have been selected for interview or not. फिर इंटरव्यू का समय आया फर्स्ट डे. आई केम टू नो द एड्रेस फ्रॉम अदर फ्रेंड्स कि एक होटल में है, वहां जाके इंक्वायरी कर लो. अगेन दैट पर्सन पुश्ड मी. आई वाज नॉट रेडी टू गो एंड इवन चेक कि हमारा आया कि नहीं आया. सो आई वेंट देयर. देन एचआर पर्सन, यस, ही गेव टाइम and said, ठीक है, आपका फाइल देखते हैं, let us see whether you have been shortlisted or selected or not. Fortunately, he took a number of files because the vacancy was around 200 for 200 positions, and of course 200 into, you can say, 10 times or 20 times candidate must be selected. Then he says, दो तीन फाइल निकाला. He said, no, you have not been selected. फिर बोला, अच्छा ठीक है, एक और लास्ट फाइल है, let me try. उसमें भी लास्ट पेज पे there was two candidates and one of them was mine. So I was that day. He said, tomorrow you have to come for the interview. So though I had not prepared myself, but still I said, ठीक है, अब opportunity है, let me try. हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो ठीक है, जहाँ है वहाँ तो है. So next day I went there, and whole day I was sitting, and my turn came out in the afternoon. Then fortunately company offered a lunch also. बोला ठीक है, आप लोग lunch लीजिए and उसके बाद हम लोग interview लेंगे. And GD, there was also a GD. So after lunch, and TV was also there. So just I was watching TV, and fortunately that helped me to settle down and relax. कुछ गाना या मूवी कुछ चल रहा था. So I enjoyed the बाद में interview, and GD was quite good. So I was satisfied, fortunately. Just you can say sometimes it happens in the life and you can pass through all those situations. And in the month of August, I got final letter. And then I joined in September. So there was a 9 months period where there was no job, but yes, you can say, आपको क्या करना, first of all, you have to believe in yourself. कोई भी काम करने से पहले, yes, you know your strength, you should believe in yourself. And then you can explore your passion and pursue for it. Definitely you will succeed. No one will stop you. कितने भी resistance आएंगे, कुछ आएंगे, but you will definitely succeed. So that is why I wanted to share this story. And you should have some good friend which will help you. You never know. If you are good, definitely there will be people who will help you in the life. कोई जरूरी नहीं कि अभी मिले, but yes, there are certain external forces that helps always. So that was the purpose to narrate that story. And in IPCL, I served there for 10 years, and there was the various capacity and various role. Initially in project execution for a brownfield project. Brownfield, probably you understand brownfield? No. Brownfield पता नहीं होगा ना? No. Okay. No, sir, we don't know. No. ऐसा जो already certain asset or plant is running, ठीक है? And now owner or customer wants to expand the business, wants to extend the setup. जैसे कि something is designed for 100-ton production in a month. Now, depending on demand of the product, owner or customer decides, no, I have to expand that business. So similar 100 से 200 करने वाला है, तो they will expand their project, they will expand their asset. तो उसमें new equipment लगाएगा, नया plant लगाएगा. So that is called brownfield. Means existing setup is there and you want to expand the capacity and you want to set up similar arrangement. जैसे आप बिल्डिंग ही करते हो, 2 story बिल्डिंग यानी उसके ऊपर एक और स्टोरी बिल्डिंग, एक और फ्लोर
खड़ा कर देना है. So that is for the building, but it is for the industry. So that is called brownfield. Where I learned all means though I was from mechanical background, but interest ये था कि जो भी सामने आएगा उसको हमें देखना है and learn करना है. Not necessarily I have to restrict myself in the field of mechanical. तो प्रोजेक्ट में हर तरह के काम होते हैं. जैसे कोई इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट को यू हैव टू पुट ऑन ए फाउंडेशन, सो इट विल नॉट रेस्ट ऑन ए लूज सॉइल, क्योंकि इक्विपमेंट इसका empty weight, heavy with the operating weight and all those things. So no, loose soil has certain strength. Civil के लोग होंगे तो will understand. That is soil bearing strength बोलते हैं. उस पे rest नहीं करता. So you have to cast new foundation. So that is civil activity. Then you have to put the equipment on foundation. Then you have to connect with piping system through which it will flow. Process fluid. Fluid is, it can be gas, it can be liquid, it can be solid also, in the powder form, semi-solid. So and then to run the equipment, you need electrical system, electrical power. Then equipment in isolation will not run. You have to control some automation. फिर वहां पे instrumentation का role आएगा. फिर some software. Then computer person will come and install some software. So it is all from all the discipline in industry required. And if you have interest, you can learn from all the discipline. So that will help in longer run. When you grow in the career, and if you have experience earlier, your knowledge, you can take decision properly in a right way. Or decision most of the time that will be correct, and it will be in the interest of the your organization, your business also. So that is project is usually for the 3 years. Then I move to what you call condition monitoring of equipment. Vibration, mechanical vibration आजकल पढ़ाई होती है कि नहीं आप लोग को? नहीं, कॉलेज में mechanical vibration is one mechanical vibration is one subject for mechanical. आजकल नहीं है colleges में. In mechanical, there is one elective. If you go for elective subject, probably in 3rd year and 4th year, in some of the institutes they provide one subject that is called mechanical vibration. It has use. अच्छा, इसमें mechanical के students हैं नहीं है? Yes, Hello. sir. Yes, sir. Tika, Sonali, and Ananya are from mechanical. Okay. तो उसमें there is one subject called mechanical vibration, where you study about vibration of equipment structure. And in industry, it is very, very important subject for particularly dynamic equipment. Dynamic means which has motion, which is rotating. And जिसको ये experience है, learning है, उनका industry में value बढ़ जाता है. They are highly paid relatively with other engineers. ठीक है, particularly for mechanical. And those engineers have good demand in international market also, because young age में लोगों को क्रेज रहता है बाहर जाने का भी. ओवरसीज असाइनमेंट यू कैन टेक इन मिडिल ईस्ट, यू कैन टेक इन यूरोप और इवन यूके और इन अदर एंड दिस साइड मलेशिया, सिंगापुर, एवरीवेयर अपॉर्चुनिटी कम्स. तो ये सब करने के बाद वैल्यू काफी बढ़ जाते हैं एंड यू कैन बी अ वेरी यूजफुल एसेट फॉर द कंपनी और बिजनेस. So I gained that experience in IPCL and then moved to maintenance part. Maintenance is sometimes boring subject, monotonous subject. उसमें एंड होता क्या है, नॉर्मल ड्यूटी आवर्स ड्यूरिंग द डे, इमरजेंसी में भी कॉल होगा, इक्विपमेंट बंद हो गया, प्लांट बंद हो गया, प्रोडक्शन लॉस है, दे विल कॉल यू कि भाई इसको अब अटेंड करो सो दैट इट शुड कम इनटू ऑपरेशन. ठीक है, तो मेंटेनेंस इज लिस्ट प्रेफर्ड, बट कुछ लोगों को इंटरेस्ट आता है. तो आई लर्न दैट. एंड देन एक और चीज था हमारे पास, क्वालिटी विच आई कैन से, आई यूज्ड टू रिटेन ऑल द इंजीनियरिंग डेटा इन memory, and I had interest to understand all design things and have it to read certain technical literature, manual, and used to go library regularly. And that helped me a lot to understand and relate technical thing with the practical means plant and industry and equipment. तो आपका जो एनालिटिकल स्किल्स है वो काफी काम आता है यहाँ पे.
क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, बट वंस यू अंडरस्टैंड, जैसे डॉक्टर का भी होता है ना, कोई आपको पेशेंट है, इफ यू गो टू ए डॉक्टर, टू एमबीबीएस और एक कोई सुपर स्पेशलिस्ट है, दोनों का एनालाइज करने का बेसिस अलग अलग होगा, बिकॉज दे हैव नॉलेज, दे हैव एक्सपीरियंस, सो दे विल गिव बेटर ट्रीटमेंट, एंड जितना रिक्वायर्ड है उतना ही देगा। दूसरा डॉक्टर सारा चीज लिख देगा, भाई कोई एक तो सूट कर जाए आप, राइट। तो ये, और कभी भी Yes. जॉब अगर स्टार्ट करना हो, इन इफ यू गेट अपॉर्चुनिटी टू एंटर इन पब्लिक सेक्टर, प्लीज प्रेफर टू गो फॉर पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट से पहले, प्राइवेट में हो सकता है इनिशियली मनी ज्यादा मिलेगा, बट लर्निंग विल बी फास्टर इन पब्लिक सेक्टर। ठीक है, ये क्लियर है? Yes, sir. हाँ। और हो सकता है कि मिले और Sir, नहीं but मिले तो कोई बात नहीं। it has been very hard to enter or like any public sector, so everyone just go for private sector. प्राइवेट सेक्टर में भी इफ यू वांट टू एंटर, प्रेफरेंस शुड बी ऑल ए ग्रेड कंपनी। ए ग्रेड मींस एग्जांपल में कैपिटल मार्केट कैप वो है जो लार्ज कैप बोलते हैं, या जैसे एग्जांपल में सॉफ्टवेयर साइड यू मे बी नोइंग टीसीएस, इन्फोसिस, ये सब इंडिया में है, या एक्सेंचर है, और उससे भी ऊपर जो एमएनसीज हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ऑल दीज आर दैट आर कमिंग इन वेरी गुड पोजीशन। कुछ स्टार्टअप होते हैं, छोटी कंपनी होती है, उसमें क्या है, एक इंजीनियर को लेगा तो सारा काम उनसे कराएगा सुबह से लेकर रात तक, and sometimes you may get tired, you may not enjoy, and then you will always look for another option, तो इनिशियली फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। तो उसके लिए अभी सेकेंड ईयर से ही आपके पास टाइम है, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर दैट इज क्रूशियल। क्लास रेगुलर अटेंड करें, और एवरी डे इफ यू go through your curriculum for 2 hours, that will be enough for you to clear all the exam थर्ड ईयर फाइनल ईयर में। उससे ज्यादा पढ़ने की, जब लोग करते क्या है, जब एग्जाम का डेट आता है, शेड्यूल आता है, तब जाके बुक निकालते हैं या नोटबुक निकालते हैं। अभी भी वैसे ही चलता है, नहीं तो बाकी समय तो Yes, sir. सिटी में आप लोग मूवी देखते Yes, होंगे या जो भी sir, करते with हैं, exams. राइट। तो ये चीज थोड़ा सा ना, कंसिस्टेंट परफॉर्मर ऑलवेज गेट वेरी गुड रिजल्ट, एंड आगे जाके भी उनके लिए लाइफ इजी होता है। तो ये जरूर करना चाहिए, दैट वुड हेल्प यू। और इंटरेस्ट या पैशन क्या है वो हमें पता होना चाहिए। समटाइम्स पीपल हैव इंटरेस्ट इन डूइंग, जस्ट एन एग्जांपल कि एमटेक करना है, कुछ लोगों को होता है एमबीए करना है, ठीक है। अगर एमबीए करने जा रहे हैं तो कैट इज ऑलवेज टफ, सबों का नहीं होगा। जस्ट आई एम गिविंग एग्जांपल। तो कैट के साथ आपके पास ऑप्शन है जीमेट एंड टॉफल, वो क्लियर करें। जीमेट हैज वैलिडिटी फॉर 5 years, कैट यू हैव टू क्लियर एवरी ईयर, ये और 1 साल के लिए वैलिड रहता है। एंड जीमेट इज ऑलवेज इजियर to clear and score higher score, because I have given that, so that is why I am saying GMAT and TOEFL I have cleared when I was in IPCL, and I had planned to go for US universities, but somehow at that point of time I got an opportunity to design side at LNT, so I moved towards there. तो जिसको MBA करना तो go for additional option of GMAT also, और जीमेट बहुत आसान है, जो 10th का मैथमेटिक्स है प्लस कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश, कॉम्प्रिहेंसिव व्हाट यू कॉल रीडिंग हैबिट एंड एसे, 6 पॉइंट का होता है, एंड इट इज ऑल फिक्स टेम्पलेट। आजकल तो गूगल पे सब मिलते हैं, यूट्यूब पे मिलते हैं, वेयर यू कैन लर्न। अगर एमटेक नहीं हुआ, कुछ बच्चों का नहीं होता है, तो यू हैव ऑप्शन टू परस्यू फॉर सर्टेन सर्टिफिकेशन कोर्स, जैसे कि मैकेनिकल में कुछ सर्टिफिकेशन कोर्स रिलेटेड टू स्मार्ट प्लांट रिलेटेड सॉफ्टवेयर आते हैं, 3D मॉडल। आजकल 3D मॉडल का हर जगह रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्रीज में, डिजाइन में, तो वो कर सकते हैं। या पाइपिंग डिजाइन सर्टिफिकेशन कोर्स होता है, यूजुअली यू कैन सर्च ऑन गूगल, 6 महीने का होता है, पुणे वगैरह में या कहीं भी आपको मिलेगा। नाउ इट इज कंडक्टेड ऑलमोस्ट ऑल द सिटीज, दिल्ली वगैरह में भी है, या शायद पटना में, आई एम नॉट श्योर बिहार का क्या हालत है, वो कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि एमटेक करने के बाद ही जॉब मिले या नहीं मिले, नो। कुछ लोगों को मशीनरी साइड है तो उसके भी कुछ कोर्सेज होते हैं, यू कैन परस्यू दैट फॉर शॉर्ट टर्म एंड यू कैन गो फॉर द जॉब्स, दैट वुड हेल्प यू। फिर Sir, as you told yeah. us
we can Yes. do the certification course. Shall we do certification course in our major projects in final year? या डेफिनेटली अगर वो लेकिन ऑनलाइन होगा बट स्टिल दैट वुड हेल्प यू उसमें क्या थोड़ा एज हो जाता है आई टेल यू ड्यूरिंग इंटरव्यू आई हैव बीन इन ऑल द कॉलेजेस ऑफ इंडिया आईआईटी एनआईटीज and other colleges even for private A grade college to recruit GET graduate engineer training when I was in L&T or in Petrofab so used to visit all the campus so I'll tell you interview में क्या पूछते हैं हम लोग क्या पूछते थे या other nowadays company क्या पूछती है they will ask you what is your interest area of interest necessarily not necessarily you will be knowing all the subjects उसमें से you can always communicate कि हमने जो जिस पे internship किया या कहीं training vocational training किया that may be the one subject another is from the elective you can communicate yes in third year or fourth year I have interest in this subject लेकिन जो subject बोलते हैं you go for thoroughly उसको prepare करके जाना है कोई भी एक सब्जेक्ट जिसको इंटरेस्ट है लाइक मशीन डिजाइन थर्मोडायनेमिक्स मटेरियल साइंस स्ट्रेंथ ऑफ मशीनरी और थ्योरी ऑफ मशीन्स देयर आर सो मेनी सब्जेक्ट्स कोई भी एक इंटरेस्ट का हो उसको थॉरोली कर लेना चाहिए दैट इज एनफ नॉट नेसेसरली यू कैन नो एवरीथिंग इन द इंटरव्यू बट यस जिसको आप बोलते हैं कि हमारा इंटरेस्ट है उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है दैट वुड हेल्प यू इंटरव्यू में and some extracurricular activities or hobbies or any other thing which you have उसको जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए साथ साथ ठीक है Yes. और So as you told, you want to complete you want to complete degree in 4 years, but you pass in December instead of June. How much it affects to your goals? yes it affected at least I lost 1 year in the process I'll tell you there were certain jobs or advertisement came in the month of June 1994 like BHEL and other company they put a requirement that candidates should have passed by latest by August in that year so you cannot appear and BHL usually at that point of time used to recruit in good numbers like 200 300 numbers engineers they used to hire in mechanical so ऐसे एक दो jobs always you will miss and preparation part also if you come if you have cleared in if I would have cleared in June like तो हमारे पास और time होता something to prepare myself right so at least I lost 1 year The same situation going with our batch too. We are 6 months late. That's why I asked this question. yes Due to so in that case as I said no आपके पास कुछ certification course कर लेना चाहिए you can inquire as I said ऑनलाइन कोर्सेज भी होते हैं पाइपिंग सिस्टम रिलेटेड मैकेनिकल इक्विपमेंट कुछ सॉफ्टवेयर होता है जैसे पीवी लाइट होता है पीवी लाइट सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर डिजाइनिंग ऑफ प्रेशर वेसल्स इज यू माइट बी नोइंग ना जैसे थिक पाइपिंग का जो डिजाइन होता है थिक पाइपिंग सिस्टम या इक्विपमेंट हाई प्रेशर सिस्टम में तो आजकल सॉफ्टवेयर है एज पर अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल ASME डिजाइन कोड होते हैं उसी से सारे इक्विपमेंट इंडस्ट्रीज में डिजाइन होता है सो यू कैन गो फॉर पीवी लाइट सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग ऑल्सो वो आप 4th ईयर जाते हैं तो वो कर सकते हैं या पाइपिंग सिस्टम से या 3D मॉडल रिलेटेड कुछ सॉफ्टवेयर उसका भी थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया दैट वुड हेल्प यू इन इंटरव्यू डेफिनेटली दैट वुड हेल्प यू कहीं भी एंड एज आई सेड MBA साइड है तो आपको परस्यू जरूर करना चाहिए कैट के अलावा नॉट नेसेसरली सारे बच्चे वो कैट क्लियर करेंगे और IIM में मिलेगा नो तो जीमेट जरूर करें देन यू विल हैव वाइड ऑप्शंस एमटेक का यू नो बेटर उसमें 200-300 के रैंक में आते हैं तो अच्छे कॉलेज मिलते हैं और यू कैन अप्लाई फॉर PSU अदरवाइज यू विल नॉट गेट सो नॉट नेसेसरली यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट टू एमटेक ओनली देयर आर वेरियस ऑप्शंस सो ऑलवेज एक्सप्लोर फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट क्या है वो देखना है और उसमें अगर डाउट होता है तो ऑलवेज यू कैन आस्क योर सीनियर यू कैन आस्क एनीवन जिनको नॉलेज है उस फील्ड में आप पूछ सकते हैं and even since you are connected I can guide you in all the any whatever your interest is there I can guide but you have to identify first of all your interest area of interest where what do you want to do
what is your passion, where you can enjoy. क्योंकि पैशन नहीं है तो जबरदस्ती इंजीनियरिंग करने का कोई वैल्यू नहीं, फिर छोड़ देना चाहिए. दैट इज आल्सो आई वुड सजेस्ट. और इवन आफ्टर डिग्री नो कुछ और इंटरेस्ट वो कर लें, जैसे अभी बहुत सारे ऑथर बन जाता है. या Actually, I have interest in defense line. Actually, I have interest in designing defense equipment. That's why I choose mechanical engineering for designing defense vehicles. ओके. अच्छा, मैकेनिकल में एक और चीज मैं बता देता हूँ. मैकेनिकल इंजीनियरिंग व्हेन यू गो इन द इंडस्ट्री ना, इसके 3 स्ट्रीम होते हैं मैकेनिकल में. वन इज, एज आई सेड, इफ यू गो टू इंजीनियरिंग और डिजाइन साइड, इट हैज 3 स्ट्रीम. वन इज डिजाइन ऑफ स्टैटिक इक्विपमेंट. स्टैटिक इक्विपमेंट क्या बोलते हैं, जैसे कि प्रेशर वेसल हुआ. प्रेशर वेसल में वेयर यू कैन स्टोर लिक्विड, सॉलिड और गैस, ऑफ कोर्स अंडर प्रेशर. प्रेशर मीन्स प्रेशराइज सिस्टम. फिर एक्सचेंजर, हीट एक्सचेंजर आप लोगों ने पढ़ा होगा, हीट एंड मास ट्रांसफर, या अभी पढ़ना होगा शायद. Yes, sir. Thermo में. हाँ, तो हीट एक्सचेंजर जिसके थ्रू देयर आर फ्लो ऑफ 2 फ्लूइड और मीडिया. फ्लूइड कूलिंग, एक कूलिंग मीडिया होगा, एक प्रोसेस मीडिया होगा, राइट. हीट एक्सचेंजर हो गया. फिर टैंक, टैंक में जिसमें कि जैसे कि एनीथिंग यू कैन स्टोर लिक्विड फॉर्म में या फिर लिक्विड एंड वेपर फॉर्म में. तो ये सारे स्टैटिक इक्विपमेंट साइड हो गए डिजाइन. एक स्ट्रीम ये. दूसरा रोटेटिंग इक्विपमेंट हो गया. रोटेटिंग इक्विपमेंट आप लोग अभी पढ़ते होंगे, जैसे स्टीम टरबाइन, वो आगे आएगा सर थर्ड ईयर में. अब ये तो नहीं होगा शायद. स्टीम टरबाइन, गैस टरबाइन, पंप शायद कुछ पढ़ा होगा सेकेंड ईयर में. कुछ है पंप्स के बारे में? सर शुरुआत में थर्मो के इंट्रोडक्शन पार्ट में था, वो पूरा डिटेल में नहीं था, जस्ट इंट्रोडक्शन. थोड़ा सा होगा मे बी इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट एंड डायनेमिक और सेंट्रीफ्यूगल पंप, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, एंड उसका फर्दर क्लासिफिकेशन होगा. Yes, sir, little bit. ठीक है. थर्ड इज पाइपिंग सिस्टम, पाइपिंग डिजाइन. सो अंडर मैकेनिकल दीज आर 3 स्ट्रीम. दैट इज व्हाई आई सेड in third year or fourth year you can go for certain piping system software training or online. That is also possible nowadays. Then I said from rotary side also, if you have interest in equipment, pumps, compressors, तो आगे पढ़ना होगा. कंप्रेसर तो होगा ही होगा, रेसिप्रोकेटिंग है, एंड certain centrifugal का कुछ होगा, पार्ट होगा शायद. गैस टरबाइन तो है ही, there is one subject, and steam turbine also there in power plant. और and static, I said static में अगर interest है तो software, PV-Lite software is there, you can go for certification of that also. That would help you. ठीक है. I want to know some of your design. As you have interest in machine designing, so I want to know some of your design. Design of what? Whatever you designed till now. What is your best design till now? You can. I had major exposure in rotating equipment, engineering, and certain design and troubleshooting, plus certain solution for the problems which come. And in industry, now capital cost is always higher for rotating equipment in oil and gas. बड़े बड़े in terms of energy, if I tell you, so you can understand like this way. It comes maximum of 60 megawatt, 75 megawatt तक का आता है एक एक इक्विपमेंट. छोटे में वो हो सकता है 5 किलोवाट का भी आएगा, and maximum is 75 megawatt. So just you can imagine the energy, quantum of energy that would be required to drive a machine. So it is always high value, and उसका इंजीनियरिंग के लिए all now. इन सब का डिजाइन एंड इंजीनियरिंग जो होता है, अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, API गिव्स ऑल डिजाइन कोड फॉर ऑल टाइप ऑफ इक्विपमेंट. जैसे अगर मैं बोलूं पंप का, सेंट्रीफ्यूगल पंप, तो इट हैज वन कोड API 610 फॉर विच, अंडर विच यू हैव टू डिजाइन एंड go for engineering, manufacturing, testing. All those things will be as per API 610. It defines everything. Like आप लोगों ने पढ़ा होगा NPSH क्या होता है, डिफरेंशियल हेड क्या है, राइट.
इम्पेलर क्या होता है, वो सारी डिफाइंड होगा, उसका रेटिंग डिफाइंड होगा, ऑल दोस थिंग, आरपीएम होगा, होगा, पावर कैसे निकालते हैं टू मीट द प्रोसेस रिक्वायरमेंट. तो एपीआई इज मस्ट फॉर रोटेटिंग साइड. एज आई सेड, एएसएम इज मस्ट फॉर स्टैटिक साइड, प्रेशर वेसल के लिए. या टैंक के लिए एपीआई 620 एंड 650 होते हैं. एक एटमॉस्फेरिक टैंक होता है, एक लो प्रेशर टैंक होता है. टैंक में ज्यादा प्रेशर क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है. प्रेशर अगर करना है तो प्रेशर वेसल में होगा, या फिर बुलेट वगैरह होता है हाई प्रेशर वेसल, जिसमें कि हाइड्रोजन वगैरह स्टोर करते हैं. वो अभी आपको उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा. तो ये 3 फील्ड हुए, इस 3 फील्ड में भी जान सकते हैं. देन यू कैन गो टू डिजाइन. बीइंग ए गर्ल यू कैन गो टुवर्ड्स डिजाइन और इंजीनियरिंग साइड, नो प्रॉब्लम. उसमें ये लाइफ इजी होता है कि ऑफिस टाइम 8 या 9 बजे से 5 बजे तक होगा, ठीक है. प्लांट में गए तो लाइफ थोड़ा डिस्टर्ब होगा. 8 बजे से शाम रात के 8 भी बजेंगे, और नाइट टाइम ऑल्सो. बीइंग ए गर्ल दे विल नॉट कॉल यू, बट फॉर बॉयज yes, they have to go to the plant in odd hours also. Sir, what your favorite what you do in your leisure time in college? What are your Leisure hobbies में इंटरेस्ट क्या है, अभी आई टेल यू. इंटरेस्ट इज नाउ माय प्राइमरी सब्जेक्ट फॉर अर्निंग. जो जॉब करता हूँ वो अब सेकेंडरी हो गया, दैट इज नाउ प्राइमरी, ठीक है. आई हैव इंटरेस्ट इन अंडरस्टैंडिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कैसे कॉर्पोरेट फंक्शन करता है, एंड बिजनेस रिलेटेड टू its impact on business and finance. तो उससे क्या होता है, आई लर्न हाउ टू मैनेज फंड्स ऑल्सो. जैसे आप इनकम किया इनिशियली तो आप अर्न करेंगे, खाएंगे पिएंगे एंजॉय करेंगे, ठीक है. बट व्हेन यू ग्रो, अर्निंग विल बी मोर, ऑफ कोर्स देयर विल बी मोर. जितना खर्च करेंगे उससे ज्यादा भी मनी बचेगा पास में, राइट. उसको प्रॉपरली हमें बचाना भी है, इन्वेस्ट भी करना है, बिकॉज वी आर लिविंग इन ए कंट्री जहाँ पे इतने पॉपुलेशन है और आपकी सिक्योरिटी नहीं है लाइफ की. इंडिया में आज अगर हमारे पास जॉब नहीं है तो हमें कोई नहीं पूछेगा, गवर्नमेंट भी नहीं पूछेगी भाई ये कौन सा आदमी है. तो उसके लिए हमें ऐसा करना कि जॉब नहीं है, ठीक है, नहीं है, आई कैन एंजॉय ऑल्सो विद अ फैमिली. सो आई शुड हैव मनी, सच दैट मच मनी, रहने के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए, मेडिकल के लिए, पेरेंट्स के लिए. एंड उसके बावजूद भी कुछ हो कि आप इंजॉय कर सकें, घूम सकें. एट दिस स्टेज यू कैन गो एनीवेयर, राइट. तो यू शुड लर्न हाउ टू मैनेज योर मनी ऑल्सो. वो दूसरे पे नहीं छोड़ना चाहिए. स्टार्टेड फ्रॉम ए विलेज. तो 7वीं क्लास तक तो कोई पढ़ाई नहीं थी विलेज में. कभी गया आया खेला कूदा, ठीक है. क्लास गया और टीचर कभी बोल दे कि भाई तुम्हारा एग्जाम है, आके लिख के जाओ. दैट वाज इन बिहार बोर्ड, एंड 7th तक यही था. 7th, yes. Then from 8th onwards I went to Bokaro Steel City where my father was a teacher, and then father told me ठीक है अब बहुत हो गया गांव का, अब चलो पढ़ाई करने. तो 8, 9, 10 तीन साल हमने पढ़ाई किया. yes, but I was sincere, and I'll tell you I was a topper in all the classes. क्योंकि जब एंटर किया तो लोग जो बाकी बच्चे थे बोलते थे कहाँ से गवार आ गया है, गांव से आ गया, बिकॉज बिहेवियर वाज डिफरेंट. ऑफ कोर्स वो सिटी से मैच नहीं करेगा. बट ग्रेजुअली आई कंडीशन माई सेल्फ एंड आई परफॉर्म वेरी वेरी वेल. बोकारो वगैरह आई वाज नंबर 1 इन ऑल 24 हाई स्कूल्स, और जो भी उस समय होता होगा. तो जब 9th 10th में गया, देन आई डिसाइडेड कि हमारे लिए इंजीनियरिंग ठीक है, इंजीनियरिंग मैं करूंगा. दैट इज व्हाई आई सफर्ड 6 months डिले हुआ हमारा, राइट. Sir, how do you Yes. define success? Success, it is a process of doing anything, not necessarily if you achieve then only it is success. No, success, okay, it is always a relative thing, but success at every stage of your life, like if you follow, not necessarily if I became CEO of organization तब मैं बोलूं कि it is my success. No, that is not a success. You cannot enjoy. उस समय तक आपके पास कुछ नहीं होगा enjoy करने के लिए. So it is always a process. If you are enjoying that process,
that will give you happiness and self satisfaction also. जैसे मैं कोई काम करता हूँ, I'll tell you. One equipment, there is a testing of an equipment before you purchase, no? वो when manufacturer जो होता है, जैसे pump हुआ, it is driven by motor and variable speed होता है, and vendor is not able to run at vendor shop, and I was invited for inspection, and client from UK, they were also there. Or G is a famous manufacturer in the world for making manufacturing gas turbine, pumps, compressors. जब उस फील्ड में जाएंगे तो विल कम टू नो दैट इज, अभी वो BHG के नाम से जानते हैं, बट दैट इज वेरी गुड एंड रेनॉन. वो टेस्टिंग नहीं कर पा रहे थे, वो फेल हो रहे थे इस सिस्टम को. देन आई एनालाइज, एंड शुरू में तो यूजुअली यूरोपियन शेयर नहीं करते हैं, नथिंग, दे विल नॉट शेयर एनीथिंग विद यू. तो जस्ट आई वाज सिटिंग, हाफ डे निकल गया. देन आई आस्क्ड, भाई आपका प्रॉब्लम क्या है, कैन यू शेयर विथ मी, प्रोबेबली आई कैन हेल्प यू बेस्ड ऑन माय नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग. तो शेयर किया. देन आई सजेस्टेड वेरी सिंपल थिंग, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में, या हैंड पंप जैसे गांव में आपने देखा होगा ना, हैंड पंप होता है ना. Yes, sir. आजकल है कि नहीं, पहले होता था. तो इट इज Yes, बेसिकली पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, एंड उसमें एक फुट वॉल्व होता है. आप लोगों ने उसमें पढ़ा होगा शायद, फ्लूइड मैकेनिक्स में, Yes. पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप के बारे में. फुट वॉल्व एक चीज होता है जो कि वन वे फ्लो होता है, सक्शन में इंस्टॉल होगा एंड वन वे फ्लो. अगर वो खराब हो गया ना तो फ्लो ऊपर जाएगा नहीं, एंड पंप विल नॉट बी एबल टू डिलीवर एनीथिंग. तो आई सजेस्टेड कि आपका ये छोटा सा चीज है, ये खराब है. तो बोला सर हमने चेक कर लिया. जैसे सर आप अगर चेक कर लिए हो, फिर से एक बार चेक करो, अगर यहाँ खराब नहीं तो कहीं खराब नहीं है, तब वो चलेगा. तो मैं चला जाता हूँ, होटल चला गया. इन द नाइट दे इन्फॉर्म मी, यस दैट वाज द प्रॉब्लम, बिकॉज इट हैज सम ओवरसाइज गैस्केट व्हिच वाज प्लगिंग द होल, जिसके थ्रू वो फ्लो पंप के पास पहुंचता था. तो देन व्हेन आई सॉल्व, इट वाज अ वेरी सिंपल थिंग दैट gave me a sense of satisfaction and certain confidence कि मैं काम कर सकता हूँ. Right? So these kind of thing where you can enjoy, you can satisfy yourself, that will be your success. Not like if I become a manager, then it is my success. No, nothing. और जो हॉबी हमारा, जिसको मैं enjoy करता हूँ, so then the whole day I am full of, you can say rejuvenated. बट इसमें प्रेशर में नहीं आना चाहिए कि आपके, देयर विल बी ऑलवेज अ कंपटीशन है, किसी का जॉब लग गया हमारा नहीं लगा. नो, सबके अपने अपने समय है, अच्छे दिन आते हैं सबों के. बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ, योर कैपेबिलिटी, यू शुड एक्सप्लोर एंड देन गो फॉर इट. यस. Looking back on your time at BCE Bhagalpur, is there anything you would have done differently or any advice you would give to your younger self? एज आई सेड, नो, स्टडी में आप कंसिस्टेंट होना चाहिए. 2 घंटे भी पढ़े तो 2 घंटा, नो इशू. एवरी डे, मे बी इन द इवनिंग when you come and spend some time, 7 to 9, just an example, that is enough. Or 7 to 10, बीच में डिनर का ब्रेक हुआ, ठीक है, फाइन, that is enough. But you should be consistent. And बच्चे लोग जो झगड़ा कर, being a girl probably you may not be involved in those things, but जो boys हैं, they are involved, engrossed in certain activities which are not fruitful, which will affect their life, career rather, spoil their life. देखिए, बच्चे जो इंजीनियरिंग कंपटीशन करके आते हैं, दे डेफिनेटली वो बच्चे अच्छे पढ़ने वाले हैं, कॉलेज स्कूल में अच्छा पढ़ाई करके ही आते हैं, बिकॉज देयर विल बी कंपटीशन एवरी ईयर. 2 to 3 lakh students must be appearing, I believe, at this stage. उसमें से 1000 बच्चे आएंगे, 1000 में भी देयर आर वेरियस कैटेगरीज. अब तो 40% जनरल में, रेस्ट ऑल आर अंडर दिस कैटेगरी. बट वो लोग भी आजकल कंपटीशन हर सेक्शन में है. सो बच्चे अच्छे ही आते हैं, और यहाँ आके आप आपस में डिस्टर्ब करते हैं, विच इज नॉट एट ऑल फ्रूटफुल, यूजफुल. जस्ट देयर इट इज स्पॉइलिंग. एक दो बच्चे हो सकते हैं कि बाइक में कहीं से आ गया एंड वो डिस्टर्ब कर रहे होंगे, क्योंकि पढ़ने वाले वहाँ, आप लाइफ में, ठीक है, व्हेन यू आर इन चाइल्डहुड,
एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, दैट इज एक्सेप्टेबल, बट एट द एज ऑफ 20 अगर ये काम कर रहे हैं तो दिस इज नॉट गुड. समटाइम्स एटीट्यूड, बिहेवियर आगे जाके ऑर्गेनाइजेशन में ना, नॉलेज इज जस्ट फॉर एंट्री पर्पस. किसी कंपनी में जो एंट्री करते हैं नॉलेज का यूज वहीं तक है, उसके बाद योर बिहेवियर मैटर्स, एटीट्यूड. सो पॉजिटिव एटीट्यूड शुड ऑलवेज बी देयर. इवन एक फ्रेज होता है ना, एवरी एडवर्सिटी हैज एन अपॉर्चुनिटी. कितना भी कष्ट हो, कितनी भी समस्या हो, उसमें कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेंगे. तो वो एक्सप्लोर करना, उस पर फोकस करना चाहिए. और ये सारे डिस्ट्रैक्शंस लाइफ में हर जगह मिलेंगे. अभी कॉलेज में आपस में झगड़ा करते हैं, व्हेन यू कम इन इंडस्ट्री वहां आपके कलीग करेंगे साथ में, आपका नेचर कुछ और है. मे बी यू बिलीव इन योर सेल्फ, यू परफॉर्म वेल ऑन द जॉब, बट कुछ चीजें और भी ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपेक्ट करते हैं कि बॉस के साथ रिलेशन कैसा है, हाउ डू यू बिहेव डेली, पंक्चुअलिटी क्या है, अदर देन द नॉलेज और जॉब विच यू आर परफॉर्मिंग. क्योंकि वहां असेसमेंट रिलेटिव होता है, नॉट लाइक ऑन द स्केल ऑफ 1 to 100 या 100% स्कोर किया तो मैं टॉपर हूं. नो, इंडस्ट्रीज में ऐसा कहीं नहीं होता है टॉप. वहां पे ऑलवेज परफॉर्मेंस इज रिलेटिव एंड देयर इज सर्टेन स्केल 1 to 5 और 1 to 8 या 1 to 10 में ही फिट करेगा, और एक दूसरे से कंपेयर करके फिट करता जाएगा. एंड इट इज ऑल सब्जेक्टिव. जो आपका मैनेजर है, सुपरवाइजर है, वो डिसाइड करेगा how you interact, how you speak out, how you work, how you deal with your peers or colleague or other members. ठीक है. How do Sir, we get internship in Yes. PSUs? How do we get internship in PSUs? What is the process? I want to know. What? Sorry. How do we get internship in PSUs? I want to know process. अच्छा, पीएसयूज में कुछ तो रेफरेंस से होता है, लाइक सेल वगैरह में. जैसे आई वाज, माय फादर वाज इन बोकारो, सो आई डिड इंटर्नशिप इन सेल. ठीक है, वहां पे कोई भी ऑफिसर और मैनेजर whom you know, our alumni will also be there. So you can inter, जैसे एनटीपीसी कालगांव है फॉर एग्जांपल. So if you approach, they will tell you and you can give your resume. तो हो जाता है आई थिंक. या प्राइवेट में भी होते ही है आजकल तो, हम जैसे बहुत सारी कंपनी में होती है. एंड देयर आर गुड कंपनीज आल्सो वेयर यू कैन लर्न. जैसे कि एलएनटी वगैरह भी है, दे हैव वेरी गुड सेटअप इन ऑल द सिटीज नाउ. मैन्युफैक्चरिंग दे, बट ये एरिया आपके लिए दूर हो जाएगा बिकॉज आई, गुजरात वगैरह काफी वहां से है. तो बीइंग ए गर्ल प्रोबब्ली यू मे नॉट प्रेफर, तो आसपास पेरेंट्स के साथ रहेंगे या जहाँ भी रहते हैं, वेयर यू कैन ऑप्ट फॉर. So, BCCL is near to me. BCCL, CCL, Tata. अच्छा, टाटा वगैरह भी होगा, एलुमनाई के थ्रू हो सकता है. या अगर वहां नहीं होता है, अगर ऑफ कोर्स यू मे नॉट हैव इंटरेस्ट, पर कोई भी इंटरेस्टेड हो बड़ौदा साइड, गुजरात साइड, देन आई कैन ऑलवेज पुश. कभी किसी को इंटरेस्ट हो तो. I will try. ओके. If that, क्योंकि दिस स्टेट इज रिलेटिवली पीसफुल. गुजरात एंड पर्टिकुलरली बड़ौदा, you cannot compare with Bihar where you are staying in Bhagalpur or in Patna. I'll tell you just an example. यहाँ पे लड़कियां जो है, गर्ल जो है, स्कूटी वगैरह रात के 2 बजे भी चला के जाते हैं अकेले. That much security is there, which you cannot imagine in Bihar, no? Or yes. not even in Delhi or North. एंड पेरेंट्स को ये चिंता नहीं रहता है कि बच्ची कहाँ गई अभी, वो आराम से आ ही जाएंगे. Because I have also 2 daughters. One is doing MBA and the second one is this time will go for medical. NEET का अभी एग्जाम दिया. and the competition is getting so much high. So like there is like do you think that is it necessary for core branch as well, that they have to learn a new skill according to their like respective their branches, like mechanical have to learn their electronics thing as well to get into like mechatronics or something.
You can otherwise mechatronics as a separate subject in some of the engineering institutes. That is one thing. Yes, you can have some additional thing which I suggested earlier. Like you can continue in core branch. It's not like that. I'll tell you in Gujarat or in Maharashtra, no, there are so many industries in chemical, petrochemical, design, engineering, oil and gas, private side also. They hire core branch people. I am still in core branch and I have changed a number of jobs, and Yes, it is as per my choice and as per my terms and conditions now. Otherwise, I'll not go. So there is a demand. Unfortunately, north side or particularly in Bihar, UP, and some of the states, opportunity is not there for the engineers except government sector. But in other side, it is there. So few certification course you can do parallelly. You are in final year. This is May, June. Na? So still there is a 6 months. I mean, time is available. You can explore with some software like PV light is for static equipment design. If you have interest, then piping engineering model, 3D model software is there, or piping layout understanding if you can, yes, sir. or Yes. if you have interest on software side, then you can go for AI, artificial intelligence certification course. Some of the courses that would help you. Sir, I have done some software like AutoCAD, SolidWorks, Oh, CATIA, very, and very, SysMix. very good. That would help you. Maybe if you can run certain even a small thing also, no, then you can Yes, share in your resume, and that will give you an edge. yes, sir. Like this software I have done in my like second year, and in my second year I always wanted to go in this kind of sector. But whenever I tried to find something like internship or something, but they would say that they will hire only with some experience. And at that time I was not having so much experience, so I dropped this idea, and I continued with some kind like coding or something else. And so at that time I dropped this because I thought there is a limited opportunity in getting this type of things. No, So no, no. Opportunity, I'll tell you. I am presently a mechanical head where piping is separate group. For mechanical engineers, I said there are three streams: S- static equipment, rotating equipment, and piping engineering. Piping engineering is separate stream for mechanical engineers. And I have okay, 70 people working with me for mechanical, mechanical okay, engineering. sir. And further, they want to expand also. In India, worldly, there are 6,000 employees from the design side. And there are so many companies available. But only problem comes when there is a disturbance in economy. There will be always upturn and down because of the commodity. Like oil is a commodity and it is driven by international politics, geopolitical situation. ना? कभी ऑयल जीरो प्राइस हो जाएगा तो फिर बिजनेस विल नॉट बी वाइबल. तो Yes, कुछ लोग रिट्रेंच भी करते हैं. सो व्हेन यू गो टू द प्राइवेट सेक्टर समटाइम्स ये माइंड मेकअप करके चलना है कि कभी ऐसा सिचुएशंस लाइफ में आएगा. सो उसके लिए घबराने की sir. जरूरत नहीं है. People Sir, but sometimes like, get this. sir, Yeah. sorry, sir, sorry to interrupt, sir. But like the people they are in your company, they are like highly qualified, and No, sir, I'll a tell student. you. No, Yes, I am from BC. Still, I belong to BC. Knowledge wise, experience wise, even with my peers, my boss, and teammates, still, if I compare, I can feel I feel proud and I have a sound knowledge and experience. यहाँ पे मैं बताता हूँ, निर्मा इंस्टीट्यूट प्राइवेट सेक्टर है, yes, sir. प्राइवेट इंस्टीट्यूट है. एक Yes, छोटा सा पारुल इंस्टीट्यूट है बड़ौदा में. इफ यू सर्च ऑन गूगल ना, yes, sir. Yes, तो sir. I वहां know. से बच्चे आते हैं. दे लर्न इन द इंडस्ट्री. नॉलेज वाइज आई टेल यू, आई हैव इंटरव्यूड इन आईआईटी एनआईटी एवरीवेयर. बच्चे क्या बोलते हैं, सर पिछला सेमेस्टर में भूल गया, न्यू सेमेस्टर मैंने पढ़ा नहीं इन फाइनल ईयर. Yes, sir. This is true. राइट ना, तो फिर Like, वैसे बच्चों yes, को कैसे लेंगे. At least, sir. as Like, I said, no, when you yes, prepare for interview, at least one subject where you have interest, you must be thorough with your knowledge and yes, understanding.
जैसे कि आपको थर्मोडायनेमिक्स ही अच्छा लगता है तो उसको थर्मोडायनेमिक साइकिल सारे पता होना चाहिए, Yes, एंड sir. वेयर डज इट वर्क, इट्स एप्लीकेशन, Yes, sir. True, sir. heat and mass transfer like exchanger, heat exchanger and calculation, there are so Yes, many sir. things. उसका भी एक सॉफ्टवेयर आता है, हीट एंड मास, STRI बोलते हैं, या वो नहीं लेना है तो पीवी लाइट सॉफ्टवेयर फॉर स्टैटिक इक्विपमेंट, वो गूगल पे सर्च करेंगे ना, यू विल Yes, फाइंड दैट, एंड इट उसमें ASME डिजाइन यूज होता है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स कोड ना, फॉर प्रेशर वेसल, yes, सेक्शन yes, 8 sir. बोलते हैं, यू मस्ट बी अवेयर अगर थोड़ा Yes, sir. इंटरेस्ट Yes. होगा तो। थोड़ा थोड़ा गूगल पे तो आजकल बहुत चीज मिलते हैं, यू कैन हैव सम नॉलेज एंड यू कैन डू दैट, तो दैट वुड हेल्प यू। अब जैसे हम लोगों का इंटरव्यू में कुछ नहीं था, सिंस आई डिड इंटर्नशिप इन सेल, तो कुछ तो नॉलेज रिलेटेड टू कार्बन कंपोजिशन, कार्बन आयरन डायग्राम थोड़ा उसको अच्छे से कर लिया, Yes, sir. लो कार्बन, मीडियम कार्बन, हाई कार्बन में कितने कंपोजिशंस होते हैं, और वैनेडियम एंड क्रोमियम एंड उसका क्या यूज है, कितने परसेंटेज तक, यही सब छोटा छोटा चीज ना। Yes, sir. Yes. एंड पैटर्न वेल्डिंग टेक्निक, इंडस्ट्री में जाना है तो थोड़ा थोड़ा ये भी जानना चाहिए, आयरन कार्बन डायग्राम, वेल्डिंग टेक्निक, मैंने इन टर्म्स ऑफ उसमें एप्लीकेशन, जैसे कि CS कार्बन स्टील हुआ, SS स्टेनलेस स्टील हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, उसके लिए वेल्डिंग टेक्निक अलग अलग है, ठीक है, Yes, sir. सभी के ये लिए सब मालूम जान होना लेना चाहिए. चाहिए, Yes, दैट sir. वुड हेल्प। ये जैसे टिग टिग कहाँ पे यूज होना है, मिग कहाँ होना है, आर्क वेल्डिंग कहाँ पे है, उसका फिर हाँ सर, फ्लेम कुछ प्रोफाइल जो एप्लीकेशन होता है, मालूम होना चाहिए. Yes. ठीक है। और मशीनरी साइड है, जैसे गैस टरबाइन में इंटरेस्ट है या स्टीम टरबाइन में, तो उसके सारे साइकिल्स हैं, उसका एप्लीकेशन है, टाइप्स हैं, ये सारे इंफॉर्मेशन होना चाहिए। Yes, sir. बट पहला कि अपना इंटरेस्ट क्या, पैशन क्या, वो एक्सप्लोर करें, एंड अपने आप पे विश्वास रखें, तो तभी हम रेस जीत सकते हैं। और आई टेल यू, नॉलेजेबल कोई भी नहीं है यहाँ पे, वो सब गेन इंडस्ट्रीज में करता है, दैट इज जस्ट गेटवे टू द इंडस्ट्री, एंटर टू द इंडस्ट्री, कॉलेज में जो बताया जाता है। और थोड़ा वो जानकारी हो तो क्रिटिकल स्पीड, अगर रोटरी साइड इंटरेस्ट हो तो, एंड Yes. थ्योरी ऑफ मशीन्स, उसका मास एंड स्टीफनेस का इंफॉर्मेशन, बेयरिंग, और क्या उसमें कपलिंग वगैरह का थोड़ा थोड़ा नॉलेज, दैट वुड हेल्प यू। Yes, sir. तो Sir, अब ये एक्सप्लोर करने की इंटरेस्ट कहाँ पे है, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज इम्पोर्टेंट। ऐसा नहीं कि दूसरे को, आपको योर नाम इज गौरव, नेम इज गौरव ना, किसी और को yes, इंटरेस्ट किसी और में है तो नो नीड टू परस्यू, उसको है तो मेरी मुझे भी होगा, नो, मुझे कुछ और है, जैसे हमारा ऑलवेज आई हैड डिफरेंट थॉट प्रोसेस, लोगों का कुछ और रहता था, आई यूज्ड टू से नहीं, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, सो आई विल नॉट फॉलो, भले हो या ना हो, दैट इज सेपरेट थिंग, बट करना तो मुझे यही है। जैसे एज ए सेड ना कि मुझे जाना तो PSU में, उसके बाद भले मैंने छोड़ दिया 10 years में, आई लेफ्ट PSU बिकॉज देयर वाज नो ग्रोथ आफ्टर 10 years, uh, there was a struggle, and in that period, that is enough to learn and understand entire industry. For learning purpose, it is very good growth also, but beyond that, yes, if you doesn't, if you do not want to enjoy, or you are not enjoying, just leave, that is what I can say. जब yes, sir. मजा नहीं आएगा तो वैसा काम रोज कैसे कर सकते हैं, 24 घंटे में 8-10 घंटे वहीं रहना है, Yes, sir. तो ये होना चाहिए। तो ऐसा कभी नहीं सोचने का कि दूसरा हमसे नॉलेजेबल है, नो, है तो है, ठीक है, बट मैं कितना उस पर मैं क्या कर सकता हूँ, दैट इज इम्पोर्टेंट। एंड आफ्टर सर्टेन स्टेज, नो, पीपल नो बाय नेम इन योर इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री में भी काम करते हो, एंड उस बेसिस पे रेफरेंस पे जॉब्स, प्राइवेट सेक्टर में ऐसे ही होता है, इफ यू हैव परफॉर्म वेल, पीपल नो, पीपल विल रिकमेंड, एंड रेस्ट योर इंटरव्यू एंड परफॉर्म बिहेवियर, बिहेवियर इज इम्पोर्टेंट। कॉलेज वाला जो बिहेवियर है वो वहीं छोड़ के आने का, जो कभी किसी से Yes, sir. करते हो गए आप लोग ना, वो वहीं सरेंडर करके उसको त्याग के निकल जाने का कॉलेज से, दैट विल नॉट हेल्प यू। वो तो होता ही है ना, Yes, हर चार yes, छह sir. महीने Yes. में आप करते होगे छोटी छोटी चीजों के लिए, कि खाना में आज क्या बना तो यही पसंद आया, अरे खाना तो ठीक है। और हम लोग का ऐसा है जो कि खाना मैं खाता नहीं हूँ, आई डजंट, आई ऑलवेज अवॉइड मेनी थिंग, ऑयली फूड एंड अदर थिंग्स, क्योंकि जो एज हुआ वो आपको प्रॉब्लम करेगा, तो खाना तो एक समय लोग भागते हैं खाने से।
Yes, sir. Sir, So like I wanted to know, sir, uh, let's say for example, sir, in our first year we like introduced to some software like CAD software, AutoCAD or some SolidWorks, and then after yes, in like 1 or 2 years we gain experience on like hands-on experience on SolidWorks or AutoCAD, and then after sir second year we have to like to be more focused on our academic section, like we have to prepare for PSU or GATE, or like somebody wants to move on like coding side, then sir for that after the second year like we have to drop this thing like the CAD modeling software or something, and we have to be more focused on the academic side. But I was having this like so much interest in going to CAD software or like modeling the sector, but then after I like left it there. And but now. today as of now I also want to go in that sector. So what will be the like procedure or the first step I should take to go in that So sector? maybe you can refresh those software, 3D model software. No, still it is available in the market, and there will be some training. You can search on Google. That would help you. Maybe in the nearby or particular, of course, in Delhi area, I know people who provide the such trainings. So you can go for certification also, no problem. And Okay. that will give you an edge to go for that option. Or there is another is this all these comes under piping engineering. Piping In engineering, like sir, simulation or something? piping means, as I said, no, equipment and piping system in industry, no, piping through piping all fluids like solid, liquid, and gas that can flow. And Okay. nowadays, before installing any equipment or going for purchase, they are simulated in software in model, 3D model. So in 3D model, you will install what? Like equipment, then piping system, then electrical system, then instrumentation, so that there should not be any clash with all these items. And it will be reviewed by certain experts, and then clearance will be given. Yes, go ahead, then go for procurement of item, then fabrication and installation. So this comes under piping engineering, piping design for nowadays. The huge requirement is always there in oil and gas energy transition. Achha, now for coming 25 years, this is 2023 to 2050, there will be a demand in energy transition and green energy. Yes, sir. So people are moving towards that. Even the company where I am working, they are focusing 75% on energy, presently energy transition, because there are certain established asset or system where all customer or owner want to, owner means जिसका company है, they want to improve and reduce the carbon footprint or carbon CO2 generation. So उसके लिए कुछ नई चीजें लगाएगा, that is all that energy transition and green energy like hydrogen, green ammonia. So coming 20-25 years is the demand for energy transition and green energy. So certain information you can have on green hydrogen, because there will be a requirement for engineers in this field. Okay, sir. Yes. Sir, after certification, like we have to apply on something, sir. Like the next step would be. Yes, yes, you can apply, and maybe when you are clearing, you can share with you can share CV with me also. I'll share my email ID. Probably I had given on yesterday. Okay, sir. Okay, I will take it. Yeah, so you can take from there, and Okay, sir. there is always a requirement. Yes, sir. So no need to restrict yourself in that region only, like in Bihar or any north area. No, there is always a requirement this side. Yes, sir. Thank you, sir. Yeah. और कुछ
Actually, sir, me and one more student are from mechanical, and rest of them are from different branches. So और क्या क्या branch है? Maybe I can guide in other branches also, no problem. Because I just said no, I have experience in now civil, yes, electrical, instrumentation, mechanical is always there. Sir, Computer side, as I said, there is a demand for artificial intelligence, machine learning, and all those things, and it will continue for coming 10 years. So okay, you should focus on those subjects. sir, for yes, electronics student. Electronic comes under in industry, no, instrumentation and electronics. Electronics is not a specific like in oil and gas or refinery or any petrochemical, no. It is instrumentation and control. Instrumentation, just I'll give you an example. Pressure, just in the field, when you measure anything like pressure, so it is measured by pressure gauge, temperature gauge, flow with flow meter or rotameter, or control automation. If system or plant will not run unless there is a automation, क्योंकि आदमी नहीं चला सकता. You can operate on keyboard or touch screen only. तो all configuration performance to meet your quality of the product वो automation होगा. वो distributed control system बोलते हैं, DCS है या program PLC. These are the systems, उनके लिए स्कोप है. और आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में डायरेक्टली इन फील्ड में नहीं मिलेगा. सो इट विल बी इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन. अब एक जैसे भारत डिफेंस वगैरह में है रिक्वायरमेंट, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अदर विल कम देयर, बट उसमें भी इंस्ट्रूमेंटेशन में ही आना है. mm, और Sir, sir, I या just want to ask, what is the most important thing you learned from your college time? मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग विच आई लर्न एंड वी एक्सपीरियंस, जो कि अभी जो मैं बोल रहा हूँ ना, कि जो बच्चे लोग समय खराब करते हैं, Yes, sir. दैट विल स्पॉइल योर कैरियर एंड स्टिल आई रिपेंट फॉर दैट. एक साल हमने लूज किया एंड एज आई सेड नो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आई गॉट हाई स्कोर एंड कॉलेज में आके आई scored 75% only overall, because there was some disturbance first year, second year, and sometimes I'll tell you, I stayed away from the hostel. I was on rent for 1 or 2 years to avoid disturbances. Second year and third year, no, I was not in the hostel. I again came back in final year. Others were there, तो हमारे साथ और लोग छोड़ के आ गए. सर मैं बोला डिस्टर्बेंस ज्यादा हो रहा है, I am spoiling here. There is no point. That will not help me. ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं, तो इसको छोड़ना चाहिए. एज आई सेड, स्टडी के लिए कंसिस्टेंटली 2 to 3 hours दैट इज एनफ, बट कंसिस्टेंटली उसमें आप स्कोर भी अच्छा करेंगे. एंड जो प्रेशर बाद में बनता है, व्हेन यू क्लियर योर फाइनल ईयर एंड देन यू गो फॉर प्रिपरेशन ऑफ पीएसयू और गेट प्रिपरेशन और अदर थिंग्स, वो पैरेलल कंसिस्टेंटली पहले से ही कर सकते हैं. So that would help you. अभी because you all are in second year except two can students, तो अभी टाइम है. Yes, sir. And third year final year, those are important. वही आगे आने वाला है. जैसे नो, कोई भी एक सब्जेक्ट ले, उसमें अपने आप को स्टडी करें एंड इन डेप्थ नॉलेज, दैट वुड हेल्प यू. और नहीं yes, समझ में आता है तो मे बी प्रोफेसर है, कुछ आपके सीनियर्स होंगे, वो भी हेल्प करेंगे. Yes, sir. या जैसे एक्सपोजर इंडस्ट्रियल या कोई भी सब्जेक्ट मिले ना, तो यू कैन check with alumni also. Even particularly for mechanical in depth in knowledge, if you need, I can always help you. And for others, yes, I don't have in depth knowledge, but for other subject, For the meeting, we got to know a lot about you and also the college. It was indeed inspiring, informative, and interesting. You are the epitome of excellence. Also, I would like to thank all the wonderful people who spoke today. And just like that, I sense a circle closing back to the beginning and near the end. At last, once again, I would like to put my strong gratitude toward the one and only Sanjeev sir for putting light
in our world with her valuable words. Thank you, sir. Thanks a lot for all the insights and experiences you shared with us. We hope to connect again soon. And most important, Gaurav sir, our Gaurav sir, I would like to thank you, Kumar Gaurav sir, who is also the founder and secretary of Campus TV and Radio Club, for joining the session and guiding us. Thanks a lot. Thank you, and it was really interactive, and I enjoyed the interaction. And I have given my number, maybe WhatsApp and email is there. So, in case of any doubt, any query in your career, and you want to know some information, I would be happy to help you all. Any subject, I said. No?